Okay, so question number 11 of the same paper on 31st December 2020, the bank column in Farad's cash book showed an overdrawn balance, that is a negative balance of 2000. The following items had not been entered in the cash book: standing order for rent, interest on bank overdraft, and credit transfer from X Limited. Credit transfer from X Limited means कि X Limited ने हमें पैसे दिए हैं. And standing order for rent is basically a payment for an expense, and interest on bank overdraft, because we have a negative balance, the bank is charging us interest on that. So they are asking you to calculate the balance on 1st January 2021. तो हमें बेसिकली ये सारे आइटम्स को कैश बुक में रिकॉर्ड करके फिर हमें इनको एक बैलेंस बताना है. तो इसके लिए आप छोटा सा टी अकाउंट बनाएं यहाँ पे, एंड यू स्टार्ट विद अ बैलेंस ब्रॉट डाउन negative 2000. I'm writing that on the credit side because that's a liability. Bank overdraft is a liability. Okay, I'm writing 2000 on the credit side because 2000 is my liability. It's an overdraft, and liabilities have a balance brought down on the credit side. So I write the balance brought down 2000, and then standing order for rent will be a credit item in this cash book because that will decrease my bank balance, क्योंकि ये हम पे कर रहे हैं. इसी तरह इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, हमें इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे दैट विल बी माई credit item in the cash book. Credit transfer from X Limited is what I am receiving, so I write that over here 2900. So जब हम यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट करेंगे तो अब कैरी डाउन यहाँ आएगा. शुरू में ओवरड्राफ्ट था और अब ओवरड्राफ्ट नहीं है. वी विल गेट अ 650 बैलेंस कैरिड डाउन. सो दिस बैलेंस कैरिड डाउन विल बिकम अ डेबिट बैलेंस ऑन 1st January 2021. इसको ब्रॉड डाउन जब हम बनाएंगे तो ये डेबिट बैलेंस बन जाएगा 650. दिस इज़ अ पॉजिटिव बैलेंस इन आर bank account. So you'll write the answer will be B, 650 debit. Okay, next question. Raj is both a customer of and a supplier to Balbir. So this is a contra entry in the sales ledger control account and the purchase ledger control account. वो पढ़ाते हुए मैं ये पढ़ाती हूँ that if someone is your customer and also your supplier. So Raj's account in Balbir's sales ledger showed a debit balance of 300. तो यहाँ पे हम बलबीर के सेल्स लेजर में 300 का डेबिट बैलेंस है. ब्रॉट डाउन लिख देंगे यहाँ पे. एंड देन दे आर सेइंग देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 100 ऑन राजेस अकाउंट इन बलबीर्स परचेजेस लेजर, विच मीन्स दैट यू शुड नो दिस दैट हमने उसको जो है वो बेसिकली राज ओज बलबीर $300 एंड वी ओ basically Balbir owes Raj $100, which means बलबीर को अपने सप्लायर को $100 देने और राज ने अपने सप्लायर को जिसको बलबीर को $300 देने. तो अब हम क्या करेंगे, अब कॉन्ट्रा एंट्री होगी ऑफ कोर्स, बिकॉज ये तो स्टूपिड है ना कि अगर बलबीर जो है वो राज को $100 दे दे और राज को कहे तुम $300 दे दो. इससे अच्छा ये नहीं है कि बलबीर जो है वो राज से $200 ले ले डिफरेंस से. सही है. तो कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली दिस विल बी सेट ऑफ फॉर $100 इन बोथ द अकाउंट्स. And then they are saying which entry would Balbir make in his purchases ledger control account. He'll basically make a set of basically contra entry. इसको पहले set off कहते थे, आजकल इसको contra entry कहते हैं. तो contra entry वो basically करेगा डेबिट पे $100 की, डेबिट $100 in the purchase ledger control account. In the sales ledger control account he'll do a credit $100. So contra entry goes in both sales ledger control account and purchases ledger control account. So okay, question number 13. Motor vehicle repairs 2000 were debited to the motor vehicles account. So motor vehicles are depreciated at 20% per annum on the balance of the account at the year end. What was the effect of this? What was the effect of this error basically? तो हमने क्या किया, मोटर व्हीकल्स को मोटर व्हीकल रिपेयर्स को हमने मोटर व्हीकल्स के अकाउंट में डाल दिया, बिकॉज ऑफ विच हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो अंडरस्टेटेड हैं बाय 2000. which means our profit is overstated by 2000.
एंड वन मोर थिंग, हमने जो है मोटर व्हीकल रिपेयर को जब मोटर व्हीकल में डाला तो इसका मतलब हमने उस पर डिप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी, तो इसका मतलब 20% ऑफ 2000 विच इज़ 400. सो वी हैव अनदर एक्सपेंस ऑफ 400 दैट वी हैव क्रिएटेड इन आर इनकम स्टेटमेंट, जो कि हमारा एक्चुअल में एक्सपेंस नहीं है डिप्रिसिएशन का, तो जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंसेस बेसिकली 400 से ओवर स्टेटेड है एंड जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो 400 से अंडर स्टेटेड है. सो एक एरर की वजह से हमारे एक्सपेंसेस अंडर स्टेटेड हैं और प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है बाय 2000. एक एरर की वजह से हमारे एक्सपेंसेस ओवर स्टेटेड हैं बाय 400 एंड प्रॉफिट अंडर स्टेटेड है बाय 400. सो द नेट इफेक्ट ऑफ इट इज़ दैट आवर प्रॉफिट इज़ ओवर स्टेटेड बाय 1600. And our effect on motor vehicles in the statement of financial position, of course, अगर हम statement of financial position में करते हैं cost minus accumulated depreciation is equal to net book value. So that means हमने ये 2000 extra डाल दिया है cost के अंदर और depreciation में भी हमने 400 extra डाल दिया है, which means our motor vehicles in the statement of financial position are also overstated by 1600. So we mark A as overstated 1600 profit for the year, overstated motor vehicles by 1600. That's it. Okay, the next question is also on depreciation. Mandeep depreciates his motor vehicles at the rate of 20% per annum using the straight line method. A full year's depreciation is provided in the year of purchase. Mandeep bought a motor vehicle on 1st January 2017 for 20,000. On 1st June 2020 he bought a second motor vehicle for 10,000. What was the depreciation charge on motor vehicles for 31st December 2020? Now notice here that जो 2017 वाला जो मोटर व्हीकल है वो 2020 में भी है उसके पास. तो 2020 में at the start of the year the cost of motor vehicle is 20,000. During the year he adds another motor vehicle for 10,000. So at the end of 2020 he has motor vehicles worth of 30,000, the cost of motor vehicles basically. So and depreciation in the straight line method, depreciation expense stays the same. So you do 30,000 and you multiply it by 20%. So your answer will come out to be 6,000 as depreciation on motor vehicles in 2020. Now notice this, अगर reducing balance method होता तो आपको जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता कि अच्छा मैंने 20,000 वाले को कितना डिप्रिशिएट कर दिया होगा पास्ट में, क्यों अब मुझे और फॉर्मूला लगाना पड़ता कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज. बट दिस वाज स्ट्रेट लाइन, सो आई डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट डिटेल्स. ठीक है, कि कब खरीदा, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्या होगी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here they say the following ledger account appeared in the books of a trader. So there's a rates account. Rates is an expense. यहाँ balance brought down दिया हुआ है. आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि रेट्स पे आपका जो है वो ये वाला रूल लगता है POOP, prepaid owing prepaid. So they basically like this, prepaid owing prepaid. So this is basically balance brought down is a prepaid and owing balance carried down is an owing. ठीक है, owing carried down है एंड में और शुरू में prepaid brought down है. They are saying which statement is correct. Owing, the other name for owing is accrued. So rates are prepaid at start of the year and accrued at the end of the year. The answer is D. Okay. A bookkeeper made the following ledger entry: bank debit, debts recovered credit. मतलब ये है कि प्रीवियसली हमने किसी को राइट ऑफ किया था और वो बंदा अब वापस आ गया और उसने हमें वापस आके पैसे दे दिए अपने. तो इसका मतलब ये है कि डेट्स रिकवर्ड तभी आता है जब आपने प्रीवियसली किसी को राइट ऑफ किया और वो बंदा जो है वो वापसी आके आपको पैसे दे दे. तो इसका मतलब ये है द करेक्ट आंसर विल बी दैट a payment has been received for a debt that had been written off. पास्ट में उसको राइट ऑफ कर दिया था तो अब वो पैसे वापस आके दे रहा है. तो डेट्स रिकवर्ड इज एन इनकम अकाउंट, दैट इज वाई डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड, एंड बैंक अकाउंट बिकॉज वी आर रिसीविंग मनी, दैट इज वाई बैंक इज बीइंग debited. Okay, next question. Question number 17. The following accounts appeared in the ledger of Delta Limited. There is a total of trade receivables account. There's balance brought down. There's balance carried down. There's sales, credit sales 101,000. There's bank, that is
whatever the amount of money your trade receivables are paying you. So bank is being debited, trade receivable account is being credited. They are saying provision for doubtful debts. So the starting provision was 1200, then provision decreased, and now the provision is 1100. तो इसका मतलब हमारा प्रोविजन डिक्रीज़ हो रहा है और हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स बेसिकली डिक्रीज़ हो रहे हैं. टोटल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स आपको साफ नज़र आ रहा है. शुरू में ट्रेड रिसीवेबल्स जो थे वो 30,000 थे, एंड में ट्रेड रिसीवेबल्स 22,000 थे, विच मीन्स ट्रेड रिसीवेबल्स इज़ डिक्रीजिंग. सो वी जस्ट कैंसिल ऑफ सी एंड डी. आंसर जो है वो ए और बी में से कोई एक है. अच्छा, दूसरी चीज़, रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वेदर इट्स इंक्रीजिंग और इट्स डिक्रीजिंग, वी कैन टेक आउट द रेट. हाउ डू वी टेक आउट द रेट? सो व्हाट वाज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन द फर्स्ट ईयर? बेसिकली एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर was 1200 divided by, at the start of the year the trade receivables was 30,000 multiplied by 100 gives me a rate of 4%. So 1200 divided by 30,000 multiplied by 100, and then end में मेरा provision for doubtful debts ये है, तो 1100 divided by trade receivables जो कि मेरे 22,000 है at end, multiplied by 100%, and that gives me 5%. So the rate of provision for doubtful debts has increased. The answer is going to be B. Next question. On 31st December 2020, Helmut had the following liabilities. तो इधर उन्होंने पूरी liabilities बताई हैं. आपको कह रहे हैं कि what was the total of non-current liabilities. So here you should know non-current liabilities are those liabilities which are repayable after 1 year. ये वाली चीज़ अगर आपको पता है, you will easily do it. So basically 2020 की बात आता है 2021. So bank loan repayable in 2021. This is your current liability. This is not your non-current liability. Bank overdraft repayable on demand. That is always a current liability. So that's not your non-current liability. Loan from finance company. Repayable 30th June 2024. This is your non-current liability. Mortgage repayable on 1st March 2022. This is also your non-current liability. So basically 7,000 की हमारे पास non-current liabilities हैं basically in the statement of financial position at 31st December 2020. Vinita, a credit customer, paid the amount owing in cash after deducting 2% discount for prompt payment. The discount for prompt payment is always cash discount. It's given at the time of payment. When your customer pays within the time, the supplier gives a cash discount to the customer. So they are saying, how did this affect Vinita's financial statement? So Vinita is the person who is giving a discount to discount, basically in डिस्काउंट अलाउड है ये, और डिस्काउंट अलाउड जो कि आता है एक्सपेंसेस सेक्शन में. तो हमारा इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली आपके एक दिस विल इंक्रीज योर एक्सपेंसेस इन द इनकम स्टेटमेंट. सो सी एंड डी कैन नॉट बी योर आंसर. योर आंसर इज ईदर ए और इट्स बी. So now they are saying, how will this affect? Okay, so your current assets will decrease because when your credit customer pays you, now whatever they owe you, उससे अब कम हो जाएगा ना. Now they have to pay you less. Once they pay you, their liability towards you decreases. तो हम यहाँ पे कर देंगे, answer will be A. Increase expenses and decrease current assets. Okay, next question. Mohan and Deepak are in partnership. They provided the following information at the end of the financial year: profit for the year, interest on capital, interest on drawings, salary. So basically interest on drawings are charged to the partners, so this will be added to the profit. इनको ऐड किया जाता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू द पार्टनर, सो दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट. बेसिकली आउट ऑफ द प्रॉफिट यू गिव इट टू द पार्टनर्स. तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं सैलरी को. तो अगर हम करें 30,600 minus 2,500 plus 360 minus 4,000 will give me 24,460. And if you know the appropriation account, and if you know that you add interest on drawings and you'll subtract interest on capital and you subtract salary, so you will get the available profit that will be distributed amongst the partners in their respective ratios. Okay. Next question. Raj and Rohit are in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Raj is entitled to an annual salary of 3,000. The profit for the year ended 31st December 2020 was 14,100. On 1st January 2020, Raj's current account had a debit balance of 1,800. What was the credit balance on Raj's current account on 1st January 2020?
21. सो दे आर सेइंग कि शुरू का बैलेंस बेसिकली इन्होंने आपको दिया हुआ है और राज के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, तो हम यहाँ पे इसको डेबिट पे रिकॉर्ड कर देंगे. वील राइट 1800. दैट इज़ द डेबिट बैलेंस इन द करंट अकाउंट. तो इसके बाद जो है राज को जो है वो सैलरी दी जाएगी. तो इसका मतलब करंट अकाउंट जस्ट वर्क्स लाइक कैपिटल. वेन एवर यू हैव समथिंग दैट इज गिवन टू द पार्टनर्स दैट इज क्रेडिटेड इन द करंट अकाउंट, वेन समथिंग इज टेकन फ्रॉम द पार्टनर्स और समथिंग दैट डिक्रीजेज द पार्टनर्स कैपिटल शुड बी डेबिटेड इन द करंट अकाउंट. सो बेसिकली सैलरी विल बी क्रेडिटेड 3000. देन राज का हमें रेशो कैलकुलेट करना है बेसिकली कि राज को प्रॉफिट कितना मिलेगा. तो एक बार 14,100 प्रॉफिट फॉर द ईयर है एंड इसमें से राज की सैलरी देने के बाद वी विल बी लेफ्ट विद 11,100. सो 11,100 को हम स्प्लिट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1 and Raj gets two shares and Rohit gets 1 share. So we'll do 11,100 multiplied by 2 divided by 3 and that will give me 7,400. That is the ratio of Raj. And जो ये profit जब राज को दिया जाएगा तो हमारे basically राज का capital बढ़ जाएगा. So in the end you will have a carried down of 8,600 and this carried down will become your brought down. That will be 8,600. So that means Raj के current account में credit balance will be 8,600. Okay, question number 22. Which items appear in the capital and reserve section of the statement of financial position of a limited company? What is capital? In the statement of financial position of the limited company, we have ordinary share capital, we have preference share capital, we have reserves in which we have retained earnings and we have general reserve. So this is equity and reserve section of the statement of financial position, basically capital and reserve section. यहाँ पे इन्होंने आपको debentures जिस भी ऑप्शन में दिया है वो ऑप्शन आंसर नहीं, बिकॉज डिबेंचर्स इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी फॉर कंपनीज. तो ये भी नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है. आपका आंसर बेसिकली डी है. ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ है नहीं. अगर होता तो इट वॉज पार्ट ऑफ इक्विटी एंड रिजर्व्स. Okay, next question. The issued share capital of AN Limited consists of ordinary shares. On 1st January 2020, the retained earnings were 78,000. For the year ended 31st December 2020, the company earned a profit of 65,000. An ordinary share dividend of 20,000 was paid during the year and a further dividend of $15,000 was proposed. So proposed dividend is not paid dividend. Proposed dividend is just an announcement. A transfer was made to general reserve for 40,000. So basically retained earnings में ही सही आप जो है वो retained earnings are basically the profits that are retained after distribution of the dividends after the transfer to the general reserve. तो past से जो retained earnings आ रही हैं उसका balance brought down is basically 78,000 that is given in the question. Now they are saying during the year they made a profit of 65,000, so that will be added to the retained earnings because that will increase your retained earnings. That is why profit is added. Then a dividend of 20,000 will have to be subtracted because this is given to the shareholders. The profit is being distributed amongst the shareholders. तो फिर आपके पास ये प्रॉफिट नहीं होगा कंपनी के पास, तो उसको माइनस करना पड़ेगा. प्रपोज डिविडेंड को माइनस नहीं करेंगे अनलेस इट इज़ पेड. वंस इट्स पेड तब जाके हम उसको माइनस करेंगे. अ ट्रांसफर ऑफ वॉज मेड टू द जनरल रिजर्व ऑफ 40,000. सो यू सब्ट्रैक्ट दैट 40,000 एंड बेसिकली इसको रिटेन अर्निंग से निकाल के आप इसको जनरल रिजर्व में डाल रहे हैं. देन व्हाट यू गेट इज़ the balance on the retained earnings at the end of the year. So this was balance at the start of the year. उसमें हमने प्रॉफिट को ऐड किया, डिविडेंड माइनस किया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमने इसमें से माइनस किया. तो हमारा आंसर इसका जो होगा ना वो आएगा 83,000. So 78,000 plus 65,000 minus 20,000 minus 40,000 gives me 83,000.